boot camp day 1. day 1. So this is it. हाँ, here head के अंदर body होता है, like body के अंदर you will enter everything you have to do in your session कह रहा हूँ in the code, like and then लाइव करना होता है इसको. गो लाइव के बटन पे जाओगे, यू कैन लाइव इट. जैसे यहाँ पे लिख दिया हेलो आई एम स्टूडेंट, ठीक है. जस्ट प्रेस ऑन यहाँ गो लाइव बटन, ओपन विथ लाइव सर्वर एंड यू विल गेट लाइव. सी ऐसे करके जस्ट सेकंड स्टूडेंट, ठीक है. जस्ट प्रेस ऑन यहाँ गो लाइव बटन, open with live server and you will get live. HTML content videos of tags, like if you have to learn React.js, anything Express.js, you must have the knowledge of the HTML, because just in any of the language HTML is important and mandatory also. Open with if you don't know about the HTML and you can't code so in the web development HTML content videos of tags, this is the basic. If you have to learn any of the React.js future domain in the Express.js, you must have the knowledge of the HTML, because I will start any of the language HTML is important and mandatory also. Open with if you don't know about so this is the HTML basics. You can create this from the explanation mark content videos of tags. Next we have essential tag. HTML tag, you know about this. Head means header, body means in the body you have to write the code of anything I have told you. Title, meta, I am showing you this one. In meta you have to connect the viewport and the width with the device and initial scale you have to merge with the code. Basically it's help in while hosting the domain, so this is not much needed in the code as you're the student process. And after that टाइटल के अंदर तो GDGC बूट कैंप पूरा जो आपका साइट का टाइटल रखना है आपको वो आप रख सकते हो यहाँ पे. एंड आफ्टर दैट आई विल शो. For paragraphs you have to integrate a p name tags mean paragraph tags. For links you have to embed any link in your code. You have to place the anchor tag, basically named with a. If you have to embed a image in your code, you have to place a img tag, just like this I'm showing you. Like you have to embed a paragraph, like my name is John. Strong means this will be bolded, so strong tag is used to bold the things and paragraph के अंदर ये पूरा आपका आ जाएगा. Next one we will image tag like this. In image you have to put your image link in here, src https dot, this is a dummy link. And alt means if your image is not visible, then what's the text you have to place. Replaced text, वो चीज यहाँ रहती है, ठीक है. So you must know about this. And for the line break, like I'm showing you, pr is used for breaking the line. I'm showing you. See, I have used the br tag and the line is breaked here. Text. So br is used for line break and strong is used. So you must know about this. And for the line break, like I'm showing you, pr is used for breaking the line. I'm showing you. See, I have used the br tag and the line is formatting means text. Just I have so br is used for line break. जैसे word में format करते हैं ना, so if you have to write in italic text, paragraph, anything. Strong means to bold, em means to write or mark things, small means to make small, subscript, superscript, all things are common formatting and semantics. Like text, phonetic text it knows, and semantic means you have to put an header, footer, main, section, article, aside, nav is basically just a second, I have one query. There is some issue with the network and fixing your version distorting everything. Just a second.
अब आ रही है ठीक से? एम आई ऑडिबल? ओके, seems good. Like this is an example of IIT Delhi website. IIT Delhi. So this is the nav bar. इसको nav bar कहते हैं इस पूरे को, हेडर और nav bar. इसके अंदर लोगो आता है कंपनी का या फिर जिसकी साइट है उसका, और जैसे यहाँ पे IIT दिल्ली का लोगो है वो, and anything else the client want to insert in this, the thing here will be inserted. Moving forward, if you have to embed list in your code, HTML code, there are two type of list, ordered and unordered list. So third type is also there, but these two are mainly used. For ordered list, you have to use the tag OL, and in that OL ordered list, you have to put the list item like I'm showing you. So OL, OL means ordered list, and for ordered list, you have to use li list items, means you have to place the list items here. Control C V. Just so this will be made list. The this this one I will show you on site. So this is the dummy image we will create using the image tag and list using the ordered list. Ordered list means you have to, the numbers will be the given 1 2 3 4 5, just like this. And moving forward, next is unordered list, same like list. Ordered list, you have to change the tagline. UL is for unordered list, like this. Unordered list, सेम प्रोसीजर फॉलो होता है इसके अंदर भी, लाइक लिस्ट आइटम नंबर 1 एंड this control C control V. So this is it. The difference in ordered and unordered list is, ऑर्डर लिस्ट में बस नंबरिंग हो जाती है 1 2 3 4 5 6 सीरियल वाइज चीजें चलती है. अनऑर्डर्ड लिस्ट में देयर विल बी द पॉइंटर्स, बस नथिंग मोर देन दैट. नेक्स्ट इज डेफिनेशन लिस्ट. डेफिनेशन लिस्ट के अंदर कि आप एक उसका टैगलाइन दे रहे हो एंड देन उसके बाद उसकी डेफिनेशन दे रहे हो, जस्ट लाइक दिस. डेफिनेशन लिस्ट यू हैव TL, उसके बाद उसके टैगलाइन देते हो DT, जस्ट लाइक आइटम 1. उसके बाद उसकी आप डिस्क्रिप्शन देते हो. फर्स्ट यू हैव टू पुट एन टैगलाइन, देन यू हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन. दिस इज द ओवरऑल फॉर दिस आइटम 1 एंड आइटम 1 का डिस्क्रिप्शन. मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, there is another element in the HTML, forms. We have to make a form for the name, text, submit, as just like the Google form. We have we will make a form in the HTML, like input section, text area, button, label, select, option, field set. These all the elements of the form section, like forms element we can say, and by using this we can make the form in the HTML. So I'm showing you the form tag. All things are sorted in the HTML. So basic language is this: input, type, text name. So I'm showing you this. So here you will give the input and type. You have to decide what type you have to enter. Placeholder means the box you are creating, and what's the person fill in the box, that will be the right here. Like placeholder will be the enter your name or anything else, like enter your age, enter your age slash domain slash class, anything else.
Here you can write. So this is it. HTML is basically the structure of an code you are building. Code I am things to like the website. This all about the forms tag. Forms element I have explained. Button for the button element. Input for the text name, ID, anything else. Label for the name, either email ID or contact number. Use the tag label. Input type I have explained: text, email, password, number, checkbox, anything else. Validation, if you have to validate the thing that the text is required, length, minimum length, maximum length, pattern क्या होना चाहिए. So all this comes under the validation. Next we have table. Like you have to build a table. Like the I have showing you a table. Forms table item. Just a second. Table order number one. So जैसे टेबल बनानी होती है उसके लिए टेबल टैग यूज किया जाता है. Nothing more than that. Moving forward, advanced table elements you can use is thread, t body, t foot, caption. Thread is used for like name, age, alias, anything else, and caption for the caption, and t body for the anything else. बेसिक टेबल की डेफिनेशन एंड एडवांस टेबल में ये है कि टेबल यू कैन बिल्ड इज स्मॉल टेबल एंड अ लार्ज टेबल. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बेसिक एंड एडवांस. Just as the you are making a small like tables and large tables. Just that for today I am sharing you a front end developer. So this is a how many you are from the front end background or started learning front end. And how many are you from backend? And how many are you from the provide the PDF of HTML? Sure, we'll share soon after the session end. We'll share all the PDF, PPT, and roadmap on the group. How many are you from the full stack development or non stack development? Look, that's great. First, I will sharing a front end development roadmap. Then we will discuss about the back end development. So, in front end development, पहले तो you have to learn the HTML like basics. We are starting with. Then CSS. Then JavaScript के अंदर भी learn the basics. DOM manipulation, fetch API, Ajax. Fetch API is nothing more than that. You have to fetch an information from an API keys. Then version control system, Git or GitHub. Then VCS hosting. VCS hosting is GitLab, GitHub, Bitbucket. You don't know about this term, but soon you will know all about this. Package manager, NPM. Like NPM is more famous than the Yarn. NPM is Node Package Manager. Basically used in backend also. Then you have to pick a framework: React, Vue.js, AngularJS, Soul.js, Quick, anything all this. Then Tailwind CSS is most famous CSS in this. Then CSS architecture, and then you have to. This is the advance of the front end development, like TypeScript, Apollo. There is a various thing in the front end development. You have to choose one of them and move forward for it. And for the backend development, just a second. Function. Yeah. You must have know about the internet server side coding and anything else. Just like VCS, repo hosting service, OS, and general knowledge, you must know about how to solve a code in the server side running. Just like I'm showing you a site. This is how many you are from backend developer. You are from backend development. Sorry, raise your hand. Which are okay, one only one person is doing backend. Harsh Notial, Vanshika Sharma. Okay, I am giving you the brief overview.
So you have to learn how to read code from the server side. Just I'm showing you. This is the manipulation. Like here from you can do also SQL injection if you are from the cybersec background. Don't worry. This is, yeah, elements. You must know about how to read these code, and from this, सॉरी गाइस, फोन आ गया था। सो बेसिकली अगर आपको बैकएंड डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है तो सबसे पहले तो कंसोल पे क्या चल रहा है, जावास्क्रिप्ट जितनी लिखी जाती है ना, सारी चीज कंसोल पे आती है। सो यू हैव टू मस्ट रीड द कंसोल कोड देन स्टार्ट। ये तो मैं बस बेसिक्स बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है और कुछ नहीं है। नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसी हो रही है कोड की, जैसे ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रोम एक्सटेंशन कैसे चल रही है, 200 कोड एरर क्या होता है, 404 कोड एरर क्या होता है। सारे एरर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कितने एमएस की स्पीड आ रही है, क्या परफॉर्मेंस है, कैसे क्या है। जैसे इसकी परफॉर्मेंस 7.78 चल रही है, वैलिड परफॉर्मेंस होती है एलसीपी की, बट फॉर दिस साइट परफॉर्मेंस एलसीपी इज गुड। मैं मतलब ज़्यादा घुसूंगा नहीं इस डिपार्टमेंट में क्योंकि अभी थोड़ा सा उसी में चल रहे हैं। कौन सा आपका नेटवर्क चल रहा है, थ्रॉटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सब चीज़ सेटअप करके आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चलना चाहिए। या दिस इज सुटेबल फॉर द बिगिनर बिकॉज वी आर फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस। अभी मैंने एचटीएमएल ही पढ़ा है, जस्ट फॉर द बैकएंड डेवलपमेंट का थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये चीज़ें हैं इसमें। दिस इज द ओवरऑल कोड। यहाँ पे होना चाहिए ये नेटवर्क का वो होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। कि आपका नेटवर्क किस हिसाब से वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर कोड, कैसे एरर है कैसे है। सारी लॉजिक बिल्डिंग बैकएंड से ही होती है। एनीथिंग यू हैव टू डू must know how to deal with the code written in backend। सब चीज जो भी आप कर रहे हो बैकएंड में, जो भी चल रहा है, एपीआई फेचिंग हो रही है, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, सब चीज आपको बैकएंड के बारे में ही पता होनी चाहिए। सो आई मस्ट रिकमेंड कि आप लोग अगर कुछ भी कर रहे हो तो बैकएंड में पहले जाओ। फ्रंट एंड इज ऑल्सो गुड बट स्टिल बैकएंड इज मस्ट, ज्यादा अच्छा है वो। उसके बाद आप डाटाबेस यूज करते हो। लाइक डाटाबेस इज फॉर स्टोरिंग ऑल द डाटा। जैसे मैंने लॉगिन करवाया यूजर को, तो उसका डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, वी विल यूज डाटाबेस। जैसे माई एसक्यूएल और एसक्यूएल तो ये सब तो पुराना हो गया। वी आर यूजिंग करेंटली मोंगोडीबी जिसमें एटलस वगैरह होता है। तो रिलेशनल डाटाबेस आना चाहिए आपके पास। दिस इज ऑल्सो नो एसक्यूएल डाटाबेस। मोंगोडीबी हो गया, इनफ्लक्स डीबी हो गया, टाइम स्केल हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जितनी है। जैसे आप कोई भी साइट पे लॉगिन कर रहे हो, वहाँ पे अपना डाटा स्टोर कर रहे हो, सो दैट इज डाटाबेस, नथिंग मोर देन दैट। फिर सारे डाटाबेस के बारे में लिखा है। फिर आपको एपीआईज के बारे में आना चाहिए, कैसे करके एपीआई फेच हो रही है। रेस्ट एपीआई है, जेसन की है, सोप की है, ग्राफक्यूएल की। एपीआई इज नथिंग बट दैट, उसके अंदर चीजें स्टोर्ड है, वहां से बस आपको उठानी है और साइट पर डालनी है। वो एपीआई की बनती है, 10 to 15 डिजिट की होती है। बस आपको एपीआई की में से डाटा लाना है और अपने साइट में यूज करनी है जहाँ पे भी आपको यूज है। जैसे हम बेसिकली जेमिनी की यूज करते हैं चैट जीपीटी के लिए। जैसे आपको कोई सबसे पहला इंसान अगर कोई क्लोन करता है तो चैट जीपीटी बनाता है। अगर आप उसमें एपीआई की इंटीग्रेट कर रहे हो, सबसे बेस्ट होता है आगे कहीं भी इंटरव्यू के लिए एज एन पर्सनल प्रोजेक्ट। अगर उसमें आप एपीआई की इंटीग्रेट कर रहे हो देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आप वहाँ पे एपीआई लेके जा रहे हो, वहाँ से आपका डाटा फेच होके आ रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द एपीआई फेचिंग। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एपीआई काम कैसे कर रही है। एपीआई बिल्डिंग थोड़ा बाद में आता है, बट एपीआई काम कैसे कर रही है यू मस्ट नो कि कैसे होती है चीजें। आप कैशिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। बेसिकली क्लाइंट साइड जो फ्रंट एंड बैक एंड का कोड होता है ना, उसको कहते हैं फ्रंट एंड बैक एंड। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, सीडीएन। सीडीएन कुछ भी नहीं है। जैसे हम किसी की एपीआई यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम जैसे फॉन्ट एविएशन की उसकी लिंक उठा के अपने पास कोड में यूज कर रहे हैं।
जैसे फॉन्ट अवेशन की सीढ़ियाँ आती है। आपको कैसा कैसा फॉन्ट चाहिए, जैसे आप उस हिसाब से ये चीज़ें ले सकते हो। जैसे फॉन्ट अवेशन का आपने कोड उठाया यहाँ से और फिर इसको यूज़ करोगे अपने कोड में। दिस इज कॉल्ड सीडीएन। एक बेसिक एग्जांपल है फॉन्ट अवेशन का जो फॉन्ट्स वगैरह के लिए यूज होती है और कुछ नहीं है। अब इसके आगे CI/CD टेस्टिंग वगैरह बहुत आगे जाके आती है, जिसमें आप वेबसाइट के ऊपर पाइपलाइंस बिल्ड करके टेस्ट करते हो, वेबसाइट को डॉकराइज करते हो बेसिकली, कि आपकी वेबसाइट सिक्योर रहे कभी भी हैकर्स वगैरह के लिए। सो CI/CD इज यूज देयर, डेवऑप्स के अंदर आ जाता है ये बेसिकली और कुछ नहीं। डिजाइन डेवलपमेंट प्रिंसिपल, ये जो एडवांस बैकएंड है उसके अंदर चीजें आती है आर्किटेक्चर वगैरह की। जब आप एक बार फ्रंट एंड पूरा खत्म कर लोगे, फ्रंट एंड मतलब कि बेसिक लेवल ऑफ बैकएंड खत्म कर लोगे, देन यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एडवांस लेवल। मैसेज ब्रेकर्स, कंटेगराइजेशन वर्सेस जो भी ग्राफ क्यूएल वेब सॉकेट्स वगैरह होते हैं, वेब सर्वर्स बनाना, दिस इज वेरी एडवांस बैकएंड। आई विल रिकमेंड पहले बेसिक खत्म कर लो, देन विल मूव फॉरवर्ड टू दी। फिर डेवऑप्स के बारे में आ जाती है। डेवऑप्स वही होती है डॉकराइज करना साइट को, या फिर ऐप में CI/CD पाइपलाइन बिल्ड करना, और कुछ नहीं। मैं अब Q&A सेशन लेना चाहूँगा। लाइक इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स दे कैन आस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल चैट सेक्शन में ही डाउट आप लोग लिखेंगे, बिकॉज माइक का ऑप्शन अभी मैंने नहीं ओपन कर रखा फॉर। और 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर दूं, सारे रिसोर्सेज शेयर हो जाएंगे ग्रुप पे अभी, रोड मैप के साथ साथ PPT या फिर कोड की फाइल है। और आप ग्रुप पे जनरल सेक्शन पे जाके कम्युनिटी पे चीज़ें पूछ सकते हो, वी विल रिप्लाई। और हर दिन 1 घंटे का सेशन होगा, 1 से 1.5 घंटे का मैक्स। बेसिक्स था आज, इसलिए जल्दी रैप अप हो गया, क्योंकि HTML में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है बताने को। सो आप चैट सेक्शन में चैट में डाल सकते हो अगर इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स।